So good morning and welcome to the Vedanta Wisdom guest session. And today we are here with our regular members, regular participants who have completed the Vedanta Wisdom program, and also our guests who are here to see what this program can give them in their life. Okay, so I welcome you all. And now let us have our guests and the participants who would like to share what they got out of this program. So who would like to go first? Gaurav-ji, you wanted to share something? Please go ahead. Yes. Thank you, Shashi ji. So I wanted to share my experiences with this program. So first thing, I got to know like who am I? Like we are a combination of mind, body, and soul. So basically, soul and mind are basically behave very differently as compared to body. And actually, we are mind and soul only, not the body. So our journey continues after that as well, in spite of body. Second thing, what I learned is, in any of your actions, any of your act, like the feeling behind that thought, like जिसको हम कहते हैं जो उसके पीछे के भाव होते हैं, that is the most important thing. Okay, that makes you the right outcome of that act, whether the act is going to be good or bad. The feeling behind that act is basically very important. Second thing is this. Third thing is, from this program, I learned that, on any situation, my way of feeling that situation, how I feel in that situation, and how I think in that situation is basically improves a lot. And that eventually improves, convert me from a reactive to be a responsive. So that journey, that difference I can see. I'm still, working in progress on that. So instead of doing any kind of reaction, first, because you react when you feel something. And if you change your feeling, you can change your thought process. And you can also be responsive instead of reactive. That is the third thing. And the final thing is, the way that you have shown in this program, right, how to continue with the spiritual journey. So that is something we are all work in progress. So I'm also working on that part. So I'm trying to be, like slowly steady. I just wanted to go forward with that. So that's all. And also the fifth thing you said, that the connections are very important in any of your, relationships. And that comes with the expectations. So basically expectations is, so you should be, away from your like expectations, right? Your attachments, you're saying that, like attachment with the expectation that you told that, you should be get rid of as soon as possible. And instead of that, you should build a connection and the affection. So these are the learnings from this program. Wow. So thank you, Shashi ji, for guiding us. Brilliant, Gaurav ji, बहुत बढ़िया आपने power packed sharing कर दिया, बहुत सारे benefits इसमें आपने डाल दिए. So thank you very much for that sharing. And just to bring more clarity to our guests who are here and also for other participants. So what we are seeing here is basically that we as a human being, जैसे हम जीव बोलते हैं, तो मनुष्य जीव जो है, हम तीन पार्ट में बने. We are a triune being. एक being है, एक doing है और एक having है. We operate in 3 different domains, right? And that is what Gaurav ji is referring to is that I am not the body, I am not the mind, I am the soul. तो basically हम एक आत्मा है जो इस शरीर में है. ये अंडरस्टैंडिंग जब आ जाती है तो आपके बहुत सारे परसेप्शंस और माइंडसेट्स चेंज हो जाते हैं. क्योंकि आप अक्सर हम देखेंगे 95% of your time possibly you are living in the body consciousness or in the mind consciousness. Very, very rare occasions will be there when you are actually connecting with the soul consciousness. So this program of Vedanta Wisdom is the highest level of Dhyan Yoga that you can get. And that brings you to the soul consciousness and that makes a huge paradigm shift. बाकी जो कुछ इन्होंने benefits बताए हैं, of course, there are some laws behind it. Now, when he says feeling is important, we are talking of a universal law which says think, feel and act. हम जो भी act करते हैं उसके पीछे process क्या है, ये clarity आती है. Because the rule is or the law is, universal law is think, feel and act. पहले आपके thinking आती है, फिर feeling आती है, उसके बाद action आता है. So whenever you are acting, if you can go back and transform your thoughts and feelings, your actions will be different.
And that gives you a big breakthrough in your actions in life or in your decisions in life, जहाँ पे आप रिएक्ट नहीं करते हैं बल्कि प्रोएक्टिव होके काम कर सकते हैं. सुना बहुत है हमने, रिएक्टिव नहीं होना, प्रोएक्टिव होना है, लेकिन उसके पीछे का लॉ क्या है वो यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आता है. राइट, सो दैट वाज वन. Second important thing which he said was law of detachment. How many of us want to be detached from all the sorrows and miseries and sufferings in life? Yes. So that is possible when you apply this law of detachment in your life. And that gives you freedom from all the attachments and sufferings and miseries. Right? And that is one of the major benefits. All the participants have experienced it in different levels. But that is one, freedom from suffering and misery, which is a very powerful tool which you take away in this program. Right? So that is what is the summarization of what Gauravji said. Okay, so big round of applause for him. Very good sharing. Thank you, Gauravji. Wonderful. And be part of this spiritual journey. And we also have the Wednesday programs to back up these programs that we have. And that keeps you ongoingly moving forward in your spiritual journey. Good. Welcome. Yes, Kanchanji, welcome. And Amitji, welcome. Yes, Hool and Preeti ji, welcome. Switch on कर लीजिए अपनी video, switch on कर लीजिए जो कर सकते हैं. Amit ji, I know you are traveling, so that is fine. All the others are, if you can, whenever Sanjeev, whenever is possible, he will switch on the video and join us. Yes, who would like to go first now? Who want to go again for the sharing? कौन share करना चाहेंगे? Participants? Yes, who would like to share? आपको क्या मिला है इस प्रोग्राम से? Session wise भी बोल सकते हैं आप. सेशन को बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बोलिए ये टॉपिक था और ये इनसाइट मिली और ये बेनिफिट मिला. So like that. And don't worry, I will relate it to the session. Don't have to worry. आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं आप शेयर करिए. Yes, Kanchan ji, go ahead. Sir, that for me it was always the confusion that what is self-love when we are saying it is a detachment. Okay. एक तरफ बोलते हो detachment है, एक तरफ बोलते हो self-love है. So how do we, how does it correlate? So मुझे तो जो in session में जो है ये सबसे बड़ी clarity आई है कि what is self-love and what is detachment. Okay, wonderful. जो एक छोटा सा एक लाइन में बता दिया इन्होंने, it is like बहुत तपस्या के बाद ये realization आती है. हाँ, by the way, let me tell you that whatever Kanchan is sharing, that the difference of self-love and detachment, so that comes when you actually know. And rag dvesh जो हम बोलते हैं, rag dvesh, हाँ, aversion and attraction, इसमें से जब आप निकल जाते हो, ये मोह माया है, यही माया है. तो इस माया के जाल से जब आप बाहर निकलोगे तभी आप अटैचमेंट से फ्री हो सकते हो. एंड दैट इज व्हाट इज रियली योर कनेक्शन विथ योरसेल्फ, व्हिच इज सेल्फ लव. So self-love is only possible, or unconditional love is only possible when you experience detachment. जब तक attachment है आप self-love experience कर ही नहीं सकते. Yes, so very profound, Kanchan जी, बहुत बढ़िया. अगर आप ये मिल गया है आपको तो आपकी जीवन की नैया पार हो गई है. हाँ, ये मान सकते हो आप. Yes, so you would be sailing very even the waters are troubled, you will sail through it very you can say safely, and singing a song, even if there are hardships, you will sail it through. Very good, very powerful. Good. Yes, who would like to go now? कौन आगे और बताना चाहेंगे? Anybody else? Leslie, you want to share? Yeah, go ahead. For me, is everything clear? Is it clear? Yeah, sure. Okay, for me, especially the Vedanta classes, stories have been majorly impactful. And every story opens out layers and layers of understanding. And especially every time the story of a donkey and that washerman comes in, it clears me so much that especially, owning up the body. So the moment you own up the body, you say, I am the body, you definitely get into the, you get entangled in the karma thing. And the stories definitely have been majorly impactful. And the other thing is, yes, Vedanta for me is the Sangat. तो जब जैसी मेरी संगत रहेगी वैसी मेरी लाइफ रहेगी. So Vedanta for me is Sangat. So like clear choice, the place that I want to walk. Wonderful, Leslie. Anything else you want to add? Okay, perfect.
Great. Let's have a round of applause for Leslie. Very powerful sharing. Two things very beautifully set up. The stories. Now Vedanta wisdom is all about stories. क्यों? क्योंकि अगर आप बताएं, बेसिकली समझें वेदांता कहाँ से आ रहा है. इट इज कमिंग फ्रॉम द 4 Vedas and the 10 major Upanishads. And the methodology of Vedanta wisdom is also the same methodology which we used to be taught in the Gurukuls. तो उसमें कैसे होता था? Obviously no PowerPoint presentation was there, right? तो गुरुजी कुछ बोलते थे और जो शिष्य सामने बैठे होते थे वो सुनते थे. So the same methodology we have used even in the Zoom platform that we have. So there were lot many stories. Stories याद रखना आसान होता है और stories के पीछे की जो wisdom होती है वो भी याद रहती है, right? So there are many stories which we have taken from various Upanishads and they are very, very powerfully packed up in such a way that the message is drilled into you. So that is the wisdom we are talking of. So what Leslie was just sharing, I'll just touch that. There is a story of washerman and the donkey. I will not tell the story now. That is the secret of the program. Yes. But yes, how many of you want freedom from bondages, karmic bondages, attachments and debts? Karmic debts सबको मालूम है. हम एक आत्मा हैं, बहुत जन्मों से यात्रा पे हैं, तो हमारे कुछ karmic debts हैं, bondages हैं, attachments हैं. How many of you want freedom from that? Now, that is the wisdom which is packed behind this story. तो इस स्टोरी में आपको फ्रीडम फ्रॉम कार्मिक डेट्स, बॉन्डेजेस एंड अटैचमेंट्स का ज्ञान मिलेगा. और वो इतना पावरफुल ज्ञान है कि थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, वो लाइफ में आ जाएगा. आप चाहो या ना चाहो, आप मानो या ना मानो, वो आपको मिलना ही है. So that is the way this whole program is structured. Yes. So Leslie, that is what Leslie was sharing when he said, you know, that story is always, whenever he listens to it, he goes to a new level of awareness. आपकी awareness बढ़ती जाएगी, आपकी understanding बढ़ती जाएगी लाइफ की, और आपको freedom मिलती जाएगी. And when you can actually, you know, you feel like getting up in the morning, standing at the top of your home on the terrace and then shouting, I am free, I am free, I am free. So that is the kind of freedom that you will experience, right? Okay, great, wonderful, wonderful, Leslie. Good. Right, anybody else who would like to share? कौन share करना चाहेंगे? And you can share again, if you get some new insights, you can come back and share again. ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दिया तो हो गया काम. It's not like a homework. It is like sharing your heart out. Yes, so feel comfortable whenever you want to share. And guests also, if you have any questions, please ask. Because I want all of you to go back with a lot of value. Not only the participants, all the guests, and including me. I also want to go back having been served for this 1.5 hours, right? Great. So who would like to go first? कौन बोलना चाहेंगे? Yes, yes, Minu ji, go ahead. I would just like to add here that when we say that we are not the body, we are not the mind, the body is just a subtle instrument for the soul's journey. So that is what I wanted to add. No, I didn't get that. My body is the? It is just a subtle instrument which helps the soul to continue the journey. Absolutely, absolutely. In fact, what we will understand here in this Vedanta wisdom program is that you exist at all the 3 levels. Only for the understanding part, who the real you is, we say that I am not the body, I am not the mind, and I am the soul. So you reach there, then you come back and you say, I am the soul also, I am the body also, I am the mind also, right? Because ultimately, the soul needs the body for the, as you said, for the journey. Experience तो तभी होगा ना soul को. Soul को experience करने के लिए body और mind चाहिए. And you are here to experience life. You are not here by accident. Soul has taken up a body to experience life, so that the karmic debts and bondages and the sanskars can be neutralized for the onward journey of self-realization. So this Vedanta wisdom program is the promise of the program is to attain self-realization, nothing less than that. And I don't want you to take up any goals less than that. If you want to be self-realized, if you want to attain self-realization, moksha, nirvana, whatever language you use, that is why you should be here. Not for having some freedom from some disease, not for having some good relationship work, not for having a workable relationship with your boss. ये सब बहुत छोटी चीजें हैं. इतनी छोटी चीजों के लिए वेदांता विजडम की जरूरत नहीं है. वेदांता विजडम चाहिए तो सेल्फ रियलाइजेशन से एक छोटा टारगेट लेके मत आना. That is my promise to you, and you will be on the journey to reach there. Yeah. And just to add what Miniju said, जो आपने कहा, body is considered to be the temple of the living God. If you can relate with it, you are divine.
and you are living in this body. So the body is the temple of the living God. That is for you and for others. So how do you treat a God in the temple? That is how you will treat others once the wisdom dawns on you. Right? Yes, you wanted to share something. आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मीनू जी? No, I got your point. Got your point? Okay, good, wonderful. So good, nice. Let's acknowledge Meenu ji for her sharing. It takes a lot of courage for a guest to share first. Huh? So thank you for that. Yes, और कौन बोलना चाहेंगे? और कौन बोलना चाहेंगे? Let me welcome Anita ji, Sunita, Yadav ji, Preeti ji. Yes, वीडियोस ऑन कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो. यस, कौन शेयर करना चाह रहे थे? आई थिंक नीता जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं. नीता जी, ओके, नीता जी गो अहेड. जी नमस्कार सर. नमस्कार. सो बहुत थैंक यू. पहले हमारा एंड है इस वेदा सेशन का 11th एपिसोड. 2-3 चीजें बहुत यूटिलिटी की यूजफुल थी जो डेली यूज के लिए भी है. दैट वाज जब हम बहुत चीजें चाहते हैं लाइफ में और उसको मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं, तो 2-3 चीजें बहुत यूटिलिटी की थी. वन फॉर्मूला वाज पॉ. सो दैट PAW वाला जो आपने दिया था, सो दैट वाज लाइक एक्सट्रीमली हेल्पफुल. और उससे जो हेल्प हुआ वो रीप्रोग्राम योर माइंड. तो पूरा का पूरा आपका पूरा माइंडसेट और आपकी एक्सपेक्टेशंस और वो सारी रीप्रोग्राम हो गई अकॉर्डिंगली. तो वो काफी हेल्पफुल हुआ. देन ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स और जो भी आपने सिखाया है, यूनिवर्सल लॉज एंड ऑल, so those things were so great, like, you know, that changes the prospect of life, like how you look at things and how the result comes, and again how you feel about the results. तो हम बस सोचते हैं कि अच्छा हमें तो इतना चाहिए था, ये तो कम मिला, बट वो अब नहीं लगता. तो वो जो हैप्पीनेस कोसेंट है वो बहुत ज्यादा ऊपर गया, और जो मिजरी या पेन या तकलीफ या डिसअपॉइंटमेंट वो सब पहले भी कम चल रहा था, उस जर्नी पे थी, बट अभी बिल्कुल मिनिमाइज हो गया. सो these things I would say that real value to life, you know, you have been adding, and would like to keep on with you on this journey as and whenever you start this session again, would like to be part of it. So thank you again, sir. Thank you Neeta ji for that, and wonderful sharing. Let's acknowledge Neeta ji for that. Thank you, sir. 2-3 चीजें बहुत अच्छी बोली नीता जी ने. सबसे पहले तो वो मॉडल बता दिया जो नहीं बताना था, बट ठीक है, कोई बात नहीं. तो द पॉ मॉडल जो बताया उन्होंने, उसका फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, राइट? सो दैट इज ए मेथोडोलॉजी दैट वी यूज टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड. सो ऑल ऑफ अस नो अबाउट कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. सबको मालूम है, जो गेस्ट लोग होंगे उनको भी मालूम होगा, राइट? तो हमारा फॉर डिस्कशन सेक वी कैन से 10% इज कॉन्शियस माइंड एंड 90% इज सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? यू हैव no clue. When I say no clue, you have absolutely no clue what is happening in the subconscious mind, right? क्योंकि ये आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं जो पास्ट लाइफ्स के भी चल रहे हैं और इस लाइफ के पास्ट के भी इवेंट्स चल रहे हैं, राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड. 2 साल के हैं आप, तब से चल रहा है, तब से आपकी सोशल कंडीशनिंग हो रही है. तो ये सारे इम्प्रिंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं. एंड ट्रस्ट मी, सबकॉन्शियस माइंड कैन ओनली बी नेगेटिव. तो मान के चलिए 90% ऑफ द माइंड इज नेगेटिव. 10% माइंड जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसमें भी कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं हाँ कॉन्शियस माइंड में पूरा पॉजिटिव रहता हूँ 24 घंटे हर रोज, 365 डेज ए डे ईयर? नहीं, कॉन्शियस माइंड में भी हम 90% नेगेटिव रहते हैं. सोसाइटी रहने नहीं देती ना. योर बॉसेस आर लाइक दैट, पीपल इन योर लाइफ आर लाइक दैट, योर नीबर्स आर लाइक दैट. सबको कहीं, पहले तो मैं समझता था कि सबको मशीन गन लेके उड़ा देना चाहिए. They don't deserve to live, right? So you understand how much of conscious mind is positive? Only 10%. So 10% of 10% is what? That is the level of life that you're living. Okay, आपको access उतना ही है. Now in this program, what we will do is we will completely reprogram your subconscious mind. As I said, complete paradigm shift. और आपका subconscious mind के patterns धुल जाएंगे. आपके चित्त में जितने भी नेगेटिविटी के जो बीज बने हुए हैं उनको साफ करने का तरीका है. बहुत सारे टेक्निक्स हैं which we will learn here, and that gives you freedom from your habits, that gives you freedom from all the negative thoughts and feelings and emotions, and that sets you free.
and with that freedom you can live your life powerfully. चाहे वो health का area हो या wealth का area हो या relationship का area हो, you will see breakthroughs happening in your life. When I say breakthroughs, I'm not asking for incremental changes. I'm talking of a major paradigm shift, and that is possible in this program. So how many of you want to be breakthrough results in your area of health? आप health में किसी areas में जूझ रहे हैं? Yeah, yes. How many of you want breakthrough areas in the area of career, job, business, income, finance, whatever? Vitamin M, in short, vitamin M shortage दिख रही है आपको, उसमें breakthrough चाहिए. This program will give you access to that. How many of you want beautiful relationships full of love, peace and happiness? दोनों हाथ ऊपर, right? Yeah. So health, wealth and relationships, these are the major areas in your life, right? And if you want breakthrough results in this, which means basically what? You want to manifest your desires. And how many of us fall short in manifesting our desires before this program? Let me put it that way, क्योंकि काफी लोग बोलेंगे अब तो आ गया है, तो ठीक है, अब आ गया है. प्रोग्राम से पहले कितने लोगों को दिक्कत होती थी अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में? Yes. Now this program gives you very powerful tools how to manifest your desires with ease and joy and glory. That's what I say. तो आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर पाएंगे. डिजायर्स को से फ्रीडम भी मिल जाएगी आपको. You will not be attached to any of the desires and you will have full power to manifest your desires. So how would that life be? Think of it. Perfect, right? So you are freedom from suffering and misery. You have freedom from all the desires and you can manifest those desires in a very beautiful manner. So imagine the kind of life that you can live. That is the promise of this program, right? And actually there is a term we use. We call the life of a Jivan Mukta. So हम यहाँ पे समझते हैं कि जीवन मुक्ता की जर्नी कैसी है. That is person who is moving forward on the spiritual journey to attain moksha. He is a Jivan Mukta, correct? Once you attain there, you become a Jivan Mukta and you attain complete freedom from all suffering and misery, complete freedom from all the desires, having fulfilled them, correct? And you also get freedom from the fear of death, from all fears. You become absolutely fearless. How many of you want that life where you're absolutely free from fear? So that is the promise of this program. Yes. And these are, by the way, not big talks. These are very small promises. Let me tell you that. As I said, this is on the way to attain self-realization. This program can take you to self-realization state. This has the power. Okay. And towards the end, when all the sharings are complete, I will share a small capsule or a small, you can say, power packed sharing छोटा सा जो मैंने तैयार किया है, which will give you a idea about what is the kind of potential of this program. Yes, and that will be new for all the participants also. So there is some learning for you left. छोटा सा एक learning बाकी है, तो वो आपको इस program के end में दूंगा, right? Okay, who else wants to share? Anybody else? I have a question. Yes. I have a question. Yes, go ahead. अभी आपने while describing about the 10% conscious and 90% subconscious, आपने कहा ये लेके चलो कि subconscious में maximum मतलब majorly negative ही है. तो ये जरा समझा दो मेरे को. मेरी understanding कुछ और थी. Mind has a tendency to latch on to the negatives. Mind has a tendency. Mind will always get attracted to negative. Yes or no? Mind will always doubt the positive and believe the negative. कितने लोगों ने ये माना हुआ है? Yes. अगर मैं आपको बोलूं आप बहुत अच्छे इंसान हो, कोई मेरे को बोलता है आके आप बड़े अच्छे इंसान हो, मैं कहूंगा इसको क्या चाहिए मेरे से, झूठ बोल रहा है. अगर वो बोले मैं आप गधे हो, मैं फटाफट मान लेता हूँ. Right? So when somebody is saying something insulting, I take it very on the face of it, I will accept it. कोई बोला आप बहुत अच्छे हो, आप तो बड़े परोपकारी हो, आपने बहुत ज्ञानी हो, तो झूठ बोल रहा है. I don't believe that, right? So mind has a nature to doubt the positive and believe the negative. तो जो conscious mind मानेगा वही तो subconscious mind में जाएगा ना. That is the basis of what I said. Subconscious mind is mostly negative. उसमें injury, hurt, blame, guilt, jealousy इन सब के बीच भरे पड़े हैं. ऐसा नहीं है कि positives नहीं है. But you will have to really hunt. It is called treasure hunt. It is like a treasure hunt. You have to hunt your memories, positive ones,
And it is an activity which I will think if we want to include this in the current program, since you have raised it up, it has come into my consciousness. So I will include this activity of treasure hunt. Let me just note down before I forget. Huh? Give me 5 seconds. So this is one activity which can possibly So a new edition for the next program. Huh? Something new has to come up, right? So treasure hunt, you can hunt the beautiful memories from your subconscious mind and make it as a reservoir. You can refer to it as a library of good memories. अगर इसको हम बार-बार recollect करेंगे, so that can also be a very, very powerful tool to live a happy life. Yes, good, Leslie. You raked up something for me. But the point, did I make myself clear for you? Good, perfect. कोई share करना चाह रहे थे, किसी ने हाथ उठाया था, मीनू जी? Yes, go ahead. इधर मुझे एक चीज पूछनी थी. आप कहते हैं 90% अगर सबकॉन्शियस है और वो 2 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, चाइल्डहुड से. So doesn't it start from the womb itself when the mother is thinking about something and the child is getting it those thoughts? Yes. Subconscious mind is on with the first breath. Even if you are in the womb, your subconscious mind is there. Developing is there. Okay. Yes, it is there. But conscious mind तभी होता है जब आप बर्थ ले लेते हो. उसके बाद conscious mind से conditioning कब होती है शुरू? अगर आप बोलोगे social conditioning, it will happen when you are out, which means out in the world. Society. और 2 साल तक आपको नहीं मालूम होता. 2-2.5 साल से बच्चे की conditioning शुरू हो जाती है. In fact, I remember very clearly some of the memories of 2.5 years old. Yeah. And just to share a lighter moment, we were in Kolkata when I started my career, and there was an instance where I and my friend were struggling to, we were thinking कि stove तो खरीद लिया हमने. That time we had that pumping stove. उसको जलाएंगे कैसे? And I recollected one in very, very faint memories of how to light a stove, which my mom used to do, and that was around when I was 2.5-3 years old. I knew exactly how the stove is to be lit. That memory was imprinted in my mind, and I did that, and it actually the flame was absolutely perfect. So there are some memories which a child can pick up even at 2.5-3 years. You have no idea, but it will pick it up. वो conditioning नहीं थी, interesting था, because my eyes lit up when I saw that beautiful flame. In fact, I wanted to catch that, and then I got a tight slap. So that is my remembrance of what happened at 2.5 years old. But yes, subconscious mind can get programmed by social conditioning. That might be the latching on when you were getting a slap. That must have been a trigger and the latch that reminds you everything. Absolutely. So that was the hurt was the trigger point, but then the enthu behind it, that was also there in the memory. So I latched on to that and then I removed that. That is how I programmed my memory. So now I can relate to that beautiful incident when I could recollect that memory, and I removed that hurt part. जो थप्पड़ से आया था वो मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता. हाँ, मेमोरी से, अच्छी मेमोरी से मजा आता है. Right. Okay, good. So that was a lighter moment. Yes. Anybody else who would like to share? But I hope I have made my point clear. Minu ji? Yes. Good. Yes, who would like to share? And why are these videos off? Videos on kariye jaldi se. And if you have any questions, my guests also can ask questions. Yes, Minu ji, go ahead. For the reprogramming, rewiring of brain, you said, are we using NLP? NLP is one technique, but not here. This is Vedanta. Vedanta has different other ways of doing it. Yeah. So for example, I'll tell you, there is a reference of a story which comes, confused line. Now, this is a story of a confused line. Okay. Where the learning is that wherever you have been a victim in your life, or wherever you think that you are very small, very weak, and that normally happens when you are a 5-year-old. 5 साल के बच्चे को क्या होगा? डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, या क्लास में मुर्गा बना होगा, या कुछ और हुआ होगा, right? 5 साल से 10 साल के बीच में यही सब होता है. So the child develops a feeling that I am not loved, nobody loves me, I am weak, I am rejected, I am a failure. All these thoughts will be programmed into the subconscious mind, right? And through the medium of the technology that we use here, like I said, it is based on the story, and the learning behind it is drilled into the mind. And that when the lion is confused, he doesn't know that he is a lion.
Yeah. So you are actually a lion behaving like a sheep. And in this learning, you will actually come out of that sheep mold and then become a lion. And how many of us have experienced it? How many of us participants here have experienced being a lion? Raise your hands. Be proud. Yeah, be proud. Raise your hands. Everybody has realized it. So that is a kind of reprogramming of the subconscious mind that happens. So in your life, wherever you are behaving like a sheep, you have the potential to behave like a lion. You are no longer the victim now. You are the victor. You are the master of your life. You are the master of your karma. You are the master of your destiny. And with that power, you live your life. Yeah. Good. Thank you. Great. So it is all based on stories. And like Leslie said, there are huge stories which are there. And how many of you remember that Yam and Nachiketa story? 5 horses ka chariot reference? Yes. And that's a very, very powerful comparison of how the soul is above the intellect, above the mind, and above the senses, above the body, like that. So that understanding gives you a lot of clarity how to operate life. That's why I say Vedanta wisdom is like an operating manual for life. You know how to operate life after this. पहले ऑपरेटिंग मैनुअल के बिना काम कर रहे थे, चलेगी कैसे लाइफ? तुमने पढ़ा ही नहीं है ऑपरेटिंग मैनुअल. तो भगवत गीता और वेदांता विजडम इज लाइक रीडिंग एन ऑपरेटिंग मैनुअल so that you can live your life properly. वरना आपको पता ही नहीं है कि उसको ऑपरेट कैसे करना है और आप जी रहे हो, मरोगे ना, मतलब फंसोगे ना. Right? When it is going to explode, you don't know. You don't know how to handle the safety valve. Correct? Yes. So that is the understanding. Great. Thank you. Thank you, Minuji, for bringing that out from me. Yes. So you have to probe and provoke me so that you will get some gyan out here. Huh? So people have to ask questions and share. And I want all of Anita ji, आप आज कुछ नहीं बोल रही हैं, वीडियो ऑन करिए और शेयर करिए. आपके भक्ति योग के शेयरिंग्स बहुत अच्छे होते हैं. We all want to hear that, and you can't divide our guests from your sharing. So Anita ji, if you're there, please raise your hand, switch on your video and share. Okay, who else wants to share? Yes, Sanjay, you want to share? Okay, go ahead. Go ahead. So सबसे पहले मेरे अपनों और उस श्रेणी में ज्वाइन आने वाले नए आगंतुकों को बहुत बहुत नमस्कार. Right? सबसे पहले तो I think I need to confess and tell you something different. शशि जी ने अभी law of detachment I think mention किया था. Okay, after doing this course, I have not been able to practice it because I am attached to this Saturday now. Every week now I'm looking forward for this Saturday, and I know Neeta ji also joins me in this, right? So बहुत difficult है. Law तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन practice करना difficult होगा. आप मतलब मैं मान ही नहीं पा रहा हूँ कि ये Saturday मतलब ये हमारी पहला पड़ाव है, मैं कहूँगा आगे की जर्नी का. ये लेकिन अंतिम stop नहीं है, right? So the journey continues. So आप सब भी इस श्रेणी में जल्दी ही आने वाले हैं, right? So decide कर लीजिए. I think that is the one point. You will get attached to this. This course is so informative and so much healing. Just to give a general perspective of this course in my understanding, हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ गोल हैं. कोई अच्छी मदर हैं, कोई अच्छे कॉर्पोरेट लाइफ वाले हैं, कोई अच्छे फादर हैं. I mean, we have got various roles to play. और सब अपने अपने जगह स्ट्रगल कर रहे हैं. जैसा कि अभी मेंशन किया आप सब लोगों ने कि हम सब अगर हमें गोल पाने के लिए 2-3 चीजें हैं. एक पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट, दैट्स व्हाट वी नॉर्मली हियर, एंड दूसरा सेल्फ बिलीफ, व्हिच मींस दैट आई एम पावरफुल, right? I can achieve. I think these are the 2 important ones which everyone normally mentions. We have all heard it, we have all been talked about it, and we have all witnessed it whenever we have faced the streets of success. Now the point is, how do you make sure that you achieve your goal, right? And so पहला point जैसे मैंने बोला, how do you clean your mind of the regular vikas, right? Which unwittingly or unconsciously or subconsciously, as Shashi was alluding it
before, while replying to Leslie's question, it gets into or it creeps in, without your knowledge, and it weakens you. तो मतलब रोज नहा के आपने अपने फिजिकल बॉडी को तो साफ कर लिया, अब ये मन के विकार को कैसे साफ करें, राइट? इसके लिए भी कुछ ना कुछ रोज के लिए कोई साबुन होना चाहिए, हेड रोल होना चाहिए. So I think that is something which you will get to know. And mind it, the buck doesn't stop there. You need to practice it continuously, and there is like a feedback loop, which continuously feeds it after the learning. And then there is a revised learning, then again there is a revised learning. So mind it, it's an iterative process. ठीक है, ये चलता रहेगा और इसी का नाम जर्नी है. तो आपने माइंड क्लीन कर लिया या उसको सशक्त बनाना शुरू कर दिया, या फिर आपको हर जगह आपको हर जगह लोगों में पॉजिटिव नजर आने शुरू हो गए, या इन शॉर्ट भगवान नजर आने लगे, राइट? और आप भी गाने लगे, तुझ में रब दिखता है, यार मैं क्या करूं, करेक्ट? सो आपका मन अब उन्मुक्त हो गया है और वो फ्रीडम है, उसमें हैप्पीनेस है. चलिए, आपको पूरे लेसन्स मिल गए तो आप आगे बढ़ गए. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आई एम नाउ what to do now, because I have reached a point where the earlier goals which I was having in my life, they seem worthless. Correct? Because I have moved ahead in my journey or spiritual journey, right? So अब मैं क्या गोल लूं, और वो गोल इस बार मजबूत होना चाहिए. जैसे शशि जी ने कहा कि मतलब ये छोटे मोटे गोल लेके मेरे सामने मत आना, मेरे पास आना तो बिल्कुल पावर पैक गोल लेके आना, जिसको सुनते ही मजा आए और तो अचीव करने के बाद मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन लेयर को भी फाड़ के निकले, राइट? So what is that kind of thing? How do you select that? We have all heard the word dharma, right? Dharamraj. And I always see that Yudhishthir, whenever dharma comes, name Yudhishthir comes in my mind, right? So what is the right dharma? There is a lot of confusion on that. How do you determine what is the right dharma? इस मामले में I think काफी information भी मिलेगी आपको going forward. Net 3-4 चीजें तो मैं समराइज करना चाहूँ. सेल्फ अवेयरनेस, आपके अंदर क्या पॉजिटिव है, आपके अंदर क्या नेगेटिव है जो आपको निकाल रहे हैं. आपको अंदर कैसे अपने मन को पावरफुल बनाना है, राइट? या विकार से उन्मुक्त करना है, या अपने अंदर जॉय, पीस और हैप्पीनेस करना है, राइट? और किस तरह, और ये सब चीज अवेयरनेस से शुरू होगी. एंड माइंड इट, अवेयरनेस होने के बावजूद आप फिर से उस भैया में या कंफर्ट जोन में वापस जा सकते हैं, करेक्ट? और दोबारा सैटरडे के कोर्स में आएंगे और बोलेंगे नहीं, मेरा एक हफ्ता पहले 3 दिन ठीक चले, बाद के 4 दिन मैं वेट कर रहे थे या कर रही थी कि सैटरडे कब आएगा और मुझे वो दवाई लेनी है या मुझे वो खाना है, या आप पिक अप दैट. सो शुरू में आई मीन a good coach, like he trains a player, they all need this thing, guidance and the right regular prescription and dose. So here is the final one, right? I think you need to have a very solid, determined mind, right? And you really need to think big and start working towards it. And this will have a tremendous transformation in your life. And all these things which I just mentioned you could also experience that, right? And you may be a different individual or a different soul, right? From what you are currently experiencing right now. I think that's what I just wanted to add. Thank you, Sanjay. Wonderful sharing. काफी विस्तार से एक्सप्लेन किया उन्होंने, उनको क्या बेनिफिट्स मिले हैं. I hope it was clear to everybody, right? If you have any questions, you can definitely ask. And 2 things that he mentioned, I would just like to highlight once again. One is law of dharma. What is the purpose of your life? And we are still in that inquiry. In the Wednesday program, it is still on, right? But in the Wednesday Vedanta program, it is taken up at a very, very different level. कि आपका सोल का क्या पर्पस है, एंड वंस यू फुलफिल दैट एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, तो सेल्फ अवेयरनेस से और लॉ ऑफ धर्मा के कनेक्शन से बहुत कुछ चीजें आपकी लाइफ में खुल के आई. नंबर 1. So that is something which is very, very, very profound. Second thing, what Sanjay has said in a very light tone, I would say. See, all your desires to the materialistic world, if you want freedom from there, you desire the divine. डिवाइन को डिजायर करने की जो डिजायर है आपकी, दैट विल बी एक्चुअली, इट इज लाइक लिबरेटिंग. बाकी सारे डिजायर्स जो हैं वो आपको बॉन्डेज में लाते हैं, बट द डिजायर फॉर द डिवाइन इज ऑलवेज लिबरेटिंग.
So Sanjay, now your attachment to coming on here on Saturdays is a desire for the divine, so which is very liberating. So it will give you a lot of power. तो वो attachment में नहीं है, वो divine के category में है, allowed है. So you register to review the program, correct? And same with Neetaji also. So those who wants to review the program, even if they are graduates and they want to review it, like many of the graduates are reviewing this. Leslie is reviewing it, Tony is reviewing it, TTG is reviewing it. She has already done that before and she is doing it. अभी चुप है इसलिए क्योंकि वो बहुत बार से शेयर कर लिया, अब क्या बार-बार शेयर करूँगा ना, kind of a thing. Yeah, that's fine. But so review करना is something which is okay. You know, it is perfect because you want to be in that communication. Perfect. So that these are the two things which I thought, you know, which he highlighted. So I thought I'll just re-emphasize that. Yes. Who else wants to share? So thank you, Sanjay, for sharing that. Wonderful. Let's all acknowledge it. It's very good. Yes, Minuji, go ahead. I think Minuji is the representative for all the guests here. Huh? Nobody else is speaking. Thank you. Go ahead. Okay. Yes. Since Sanjay ji mentioned and you clarified that the divine purpose. So what I feel divine is like serving others. Is that the only divine, or serving your family and loved ones comes under divine? That distinction I wanted to know. Okay. So that I will answer that in a slightly different way. Okay. So in Vedanta wisdom, there is one Mahavakya. There is a topic of Mahavakya. So who would like to say the first Mahavakya which will answer this? Let me see your presence of mind. Who wants to share that? एक महावाक्य जो इनके जवाब का, जो इनके सवाल का जवाब है. कौन सा महावाक्य? हाँ? अहम ब्रह्मास्मि. अहम ब्रह्मास्मि. You are divine. I am divine. So if I am telling you, I will say Tattvamasi. Tattvamasi. You are that. And for you, you have to say Aham Brahmasmi. I am divine. So now the connection of Atman and Brahman. आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जो हम अद्वैत वेदांता में सीखते हैं वो ये है कि आत्मा ही परमात्मा है. Okay. The divinity is within me. Yeah, you are divine. Whichever way you want to understand that understanding will go from one level to another level to another level to another level. In the 11 sessions, it will go to such a level that you will actually understand your true nature. And when I say your true nature, sorry, you have a question? Yeah, I was just wanting to know if divinity, I am divine, then serving myself and self-love comes in divinity. So that starts from me. That is the answer for my question, right? Yes. Onward journey में जब तक आप उस realization तक पहुंचेंगे, you will self-love is a journey. It will start with you. It will spread to others. So first you have to fill yourself with love. Only then you can share that with others, right? So self-love is important, but that is on the onward journey. Once you attain self-realization, or once you are there to some level you have attained to some kind of stability, then you will see yourself in every other living being. I am there in the whole universe. The whole universe is in me. And that is what is called Yat Pinde Tat Brahmande. Yeah. Microcosm and the macrocosm are exactly the same. And that is where you understand your real nature. And what is your real nature? Infinite. How many of us have realized that part? Infinite को कैसे realize किया था? कितने लोग जानते हैं? Participants, raise your hand. Remember that the session, mind-blowing session, when you actually experience infinite? Yes. So practical demonstration of infinite, which mind doesn't understand. That is what you will get in this Vedanta Wisdom program. So you will understand soul is infinite. परमात्मा इज इनफाइनाइट, यानी कि आत्मा भी इनफाइनाइट है, परमात्मा भी इनफाइनाइट है. तो दो इनफाइनाइट नहीं हो सकते ना, एक ही इनफाइनाइट हो सकते हैं. सो यू आर दैट. सो दाउ यू आर दैट एंड अहम ब्रह्मास्मि. दैट इज हाउ इट इज. एंड नाउ दैट रियलाइजेशन व्हेन इट कम्स इनटू योर लाइफ, you have to see that impact. That is huge. That is huge. You will blow all the obstacles in your life with a small whisper. अब छोटी सी फूक मारोगे, आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स उड़ते हुए जाएंगे. How many of you want to experience that? Yes, so that is the promise of this program. Yes. Yes. So Meenuji, did I answer your question? Yes, very well. Great. Thank you. Let's acknowledge Meenuji. A lot of questions she is asking for the benefit of the guests. Thank you.
Yes, who would like to go ahead and share now? There are lot many people who are waiting. Preeti ji, Anita ji, and I wanted to add something. just 1 second, Leslie. Just 1 second. I'm coming to you. ये ओमुक G5 कौन है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को. हेलो. आपको लेस्ली यू हैव इनवाइटेड समबडी. किसी ने इनवाइट किया गेस्ट को? तो इंट्रोड्यूस करिए अपने गेस्ट को. इंट्रोड्यूस करिए. मैंने तो मीनू जी को किया था. हाँ जी. मैंने मीनू इनवाइट. That's fine. Okay, Leslie ji, you go ahead and share. We'll catch up with the others later. Yeah, go ahead. Something which actually opened out majorly in these sessions for me, rather all the classes, I would say, is initially I am Brahmasmi, I am God. ये बड़े आराम से हम कहते हैं और उस जगह से हमें दुनिया में बड़ी गलतियां दिखती हैं, लोगों में गलतियां दिखती हैं कि अरे मैं गॉड हूं, ये क्यों नहीं उस तरीके से कर रहा. एंड व्हाट रियली गॉट clear for me is I am God, everybody is God, and whatever is happening, everything is happening by the will of God. So the basically thing, दूसरों का गिरना भी मुझे अब उसमें भगवान दिखने लग गया है. And हर चीज दूसरे का गिरना, दूसरे के आदतों में, दूसरों की चॉइसेस में मुझे क्लियरली उन्हीं की मतलब हर चीज में मेरे को गॉड दिखने लग गया. So like I have developed this huge trust in the entire cosmos, the universe, the whole process. क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सब अपने हिसाब से हो रहा है एंड सब अपनी जर्नी पे हैं. तो पहले मुझे दूसरी जगहों पे प्रॉब्लम दिखता था, रिश्तों में प्रॉब्लम दिखती थी, बट अब नहीं दिखती. अब मुझे कंप्लीट एक्सेप्टेंस दिखता है और मुझे दिखता है कि मैं अगर जो हूँ तो वो भी वही है और वो अपने चॉइसेस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है. सो मेरी सफरिंग काफी हद तक वहां पे भी थी और वो मेरी लेट गो हुई है. एंड लाइक यू नो टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स प्रोसेस एंड कंप्लीट ट्रस्ट इन व्हाटएवर इज हैपनिंग इज परफेक्टली हैपनिंग. जैसे वो गीता में कहा जाता है कि जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है और जो होगा वो भी बिल्कुल सही होगा. सो यू नो दैट्स अ मेजर रिलैक्सेशन के बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है सब कुछ, सब भगवान ही है, सब कुछ लीला बिल्कुल टनाटन चल रही. Absolutely perfect, Leslie. Wonderful understanding and great sharing. Thank you. But I will just add a corrective thought here. जब हम ये बोल रहे हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो वो तब है जब आप अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी से मर्ज कर चुके हैं. अब आप ये मत बोलना किसी को, जैसे होता है ना, जस्ट टू गिव ए थॉट, कोई किसी की गर्दन उड़ा दो, आप बोले मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, भगवान करा रहे थे. नहीं, सॉरी, you will be hanged for your crime. Okay, so you can't kill somebody and say God did it. No, you have to understand that when you surrender your will to the divine will, then everything is happening as per the divine will. So the divine intelligence which is running the whole universe, which is running all the living beings on this planet Earth, is also running through you, provided you allow that to happen. Don't poke your 1% conscious mind into that will. You will spoil the whole thing. आप खीर में नमक मिला दोगे, फिर कहोगे बड़ी अच्छी खीर बनी है, बकवास बनी है, क्योंकि तुमने अपना 1% का कॉन्शियस माइंड की गंदगी मिला दी उसमें. गंगा जल में तुमने क्या बोलेंगे संजय, क्या डाल दूं उसमें? नाली का पानी मिला दिया तुमने. अब इट इज नो लॉन्गर ए गंगा जल. वो डिवाइन विल नहीं रहा. अब डिवाइन विल तब है जब तुम अपनी विल को डिवाइन के साथ सरेंडर कर दो. Then it is a divine will. Then you surrender to the divine. That's why I mentioned yesterday also. And when you say everything is divine, then you have to understand this is a basic learning of Isha Upanishad. Right? Isha Vasyamidam Sarvam. Yat kinchi jagatyam jagat. I don't want to go through the whole verse now, but that is sufficient. Isha Upanishad tells you that every atom of this universe is filled with the God particle. Science has just now found it. Our Rishi Muni were spiritual scientists who found that 5,000 years back. And that is the Vedanta wisdom we are talking of. Yeah. So God is there in every atom, in every cell in your body. That divine intelligence is running every cell in your body. So you have really worked hard to get a heart attack, because you have made all the cells of your heart work against you.
You are working against the principle of the divine. For your kidney to fail, for getting a paralysis, for getting a brain fever, for getting any single discomfort in your body, you have worked really, really hard for that cell to work against you. You understand what I'm trying to say? This body is the greatest instrument or the creation of God. Infinitely intricate, most gloriously accurate instrument in the universe is this body, which God has created, and you are given a gift. When you came here, when the soul came to take a birth, you were given a gift of this body. And this was supposed to be given to you on a rent for 80-100 years, for which you don't have to pay any rent. तुमको फ्री में एक चीज मिली है रेंट पे रहने के लिए, घर दिए है तुमको एक. Because if you are not a body, you are a soul, then you have to have a body. It is your home. It is your temple. You have been given this as rent for 80-100 years. All you have to do is be thankful for that. And what are we doing? Are we grateful for this body that we have? Yes. Are we grateful for every breath that we are taking? No, we are the most ungrateful people, ungrateful species on this planet Earth. We have the power to say, express gratitude, we don't do it. And that is why all the sufferings and miseries are coming. Okay, just to wake you up, and that was a wake-up call. So as a human being, we need to be grateful for the body that we are getting as a gift. We should be grateful for all the breath that we are using. मुझे थोड़ा और clear करो, because there is one part where Krishna is telling Arjuna कि तुम क्यों देख रहे हो कि तुम ये कर रहे हो या वो सब कुछ हो रहा है, कि कहते हैं everything I am the one who's doing it, everything is being done by me. You have to surrender to me now. Last में यही तो बोला, surrender to me, then everything I will do. See, you have to look at it in a different way. Let's say I'm cutting you short, but because I understand what you're trying to say, okay? तो सबसे पहली चीज है, हम बोलते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है. मतलब क्या है? आप एक्ट कर रहे हो, ऊपर वाला देख रहा है. God is the witness. God doesn't do anything. God is the witness. And you are the karta. Body is the karta, correct? If you consider yourself away from the divine. Divine is akarta abhokta. And Atman, the soul, is actually akarta abhokta. You have to understand this. So when you become the witness, then the divine will work through you. So you have to surrender to the divine for the divine to work through you as divine. अभी अंडरस्टैंडिंग यहीं पे छोड़ देता हूँ. Leslie, we will have a one-to-one later on. Okay? Yeah, because otherwise the guests will not be able to catch anything. वो बढ़ जाएगा. हाँ, तो अभी इतना समझो. Individual will को अगर आपने divine बनाना है, तो you have to first surrender to the divine, accept the divine will as your will. You can't say do your will and then say this is divine. No, that is not the way. Okay? So first you have to surrender yourself to the divine. Divine के will को अपना will बना सकते हो. Then the divine will work through you. Then you can say it is God working through me. Okay, like how many healers are there? I know many of the participants are here are healers, right? They have done my healers program. So as a healer, what do we say? Do I have the power to heal anybody? No, it is the divine power which is running through me, which is healing others, right? So divine is working through me when I surrender myself to the divine. Now the divine energies are flowing through me, and that energy is healing the people, healing myself and the healing all the others. That is the power of healing, correct? That is why magic and miracles happen in healing. शशि धर में healing करने की ताकत नहीं है, लेकिन वो divine जो शशि धर के through operate कर रहा है has the power to create magic and miracles through healing, and that is what is happening. This is surrender to the divine. But if I say Shashi Dhar will heal everybody, I will collapse in 2 days time. शशि धर को हटाना है. शशि धर को हटना पड़ेगा, divine को आना पड़ेगा healing के लिए. Understand what I mean? So you have to surrender to the divine for the divine to act through you. So you are a channel, you are a conduit through whom the light is flowing. That light is the divine light. Okay, let's put this discussion on stay right now. We will discuss that, continue that later. Leslie, yeah? Did I make sense to you? Yes, we'll have this later. Yeah, we will have this later. Okay, good. Yes, Gaurav ji, go ahead. I just want
to share one experience. जब हम ये बात कर रहे हैं कि डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है, and I have my will have to be the divine will, then I can proceed forward in my spiritual journey. अगर मैं एक normal उसमें कहूँ, but I actually practically experience in a different way also. Like in my official work, basically there was a very difficult conversation I have to make, and different difficult convincing I have to make to the other people, and I was actually very worried, how should I do that? It was very difficult actually going to be. So I think about it, that I have to make my being as a divine and then do that act, right? So I connected my soul somehow, everything will be fine with the very positivity. I have to put my point, I have to convince them. And when I did that, basically, it actually works. Basically, I feel that power somehow when I spoke with that thought process, that connecting with the divine and with the very positivity, when I put that everything, the thing really works very well. Absolutely perfect. Very good, Gauraji. Perfect. So the first thing is the understanding that I am divine. You have to first believe that I am divine. The divine is there in me, and it is true. It is absolutely true. आत्मा जो आप हो, आप आत्मा हो ना, तभी तो यहाँ के इस फोरम में बैठे हो. तो आत्मा की जर्नी तो परमात्मा के साथ जो रियलाइजेशन है वही है. So you have to understand nature of Atman and Paramatman is same, and I am the soul. So when I am divine, how do you experience your life? Depends on when you act as divine. Yeah. एक्सपीरियंस में आना चाहिए ना, थ्योरी में नहीं है. आई एम डिवाइन बोलो फिर दूसरों को गालियां देने लग जाओ तो आप डिवाइन नहीं रहे ना. Exactly. Normally what happens is when you do an argument, you make a ego clash, right? And things will not go in the direction that you want and that it should be. But when I connected with the divine, in that conversation there was no ego at all. That comes in picture. I understand them, I listen them, I give them the proper respect. I put my point and they actually give me that respect, of understanding the point and, not, getting the ego into it. So that helps me a lot. बहुत बढ़िया distinction किया है गौरव जी. Very good. See, what is there difference between the my will and divine will is what? My will is coming from the ego state, divine will is coming from the self state. Understand that much, that is sufficient. तो आपकी पूरी जर्नी जो है वो ईगो से निकल के, ईगो कॉन्शियसनेस से निकल के सेल्फ की कॉन्शियसनेस में जाना है. That means ego means what? Body consciousness. Body consciousness से निकल के soul consciousness में जो जाना है, that is what the journey is. तमोगुण से सतोगुण में जाना है और फिर सतोगुण से निर्गुण में जाना है. अगर गेस्ट को ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो डोंट वरी, we will be doing that in details during this program. Others are aware of it, so it is a normal term that we use. Your spiritual journey is always from the darkness to the light. सुना है ना आपने? असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय. It is always from darkness to the light, from ignorance to the truth, right? From fear to fearlessness. That is what we are talking of, correct? तो तमोगुण से सतोगुण की तरफ की जर्नी है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, और उसको फुल थ्रॉटल फिफ्थ गियर में या एरोप्लेन मोड में उड़ा के लेके जाना. दैट इज द प्रॉमिस ऑफ दिस प्रोग्राम. Okay, so your spiritual journey will take up a real booster dose. Yeah, the booster dose मिल जाएगा आपको. That is what the promise is. Okay, so good Gauraji, good sharing, very powerful sharing. Okay, any other questions? Anybody else who would like to share? कौन share करना रह गए मेरे को? Let me check. अनीता जी, yes, अनीता जी का हाथ ऊपर आ गया है. Very good, go ahead. सभी को नमस्कार. Sure. और न्यू मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में. और ये कहें तो परमात्मा की विशेष कृपा ही हुई है कि मुझे ये सेशन अटेंड करने का मौका मिला और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई माइंड में. एक्चुअली मेरा रास्ता भक्ति वाला है थोड़ा बहुत, क्योंकि बचपन से उसी पे चले हैं. तो लेकिन जब हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं या हमारे को कुछ ज्ञान की बातें समझ आती हैं तो उनको लेकर जब हम चलते हैं तो हमारे को इस मार्ग में, साधना के मार्ग में चलने में और आसानी होती है. और
सर ने जो हमारा सेशन इतने टाइम से लिया, बहुत शशि सर का जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, समझाने का तरीका है, बहुत अच्छा है। और ग्रुप में सबकी शेयरिंग से भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। एंड एक चीज और है जो मुझे कहना है कि ज्ञान योग के साथ साथ अगर हम भक्ति का रस भी इसमें डालते हैं तो उस ज्ञान को डाइजेस्ट करना तो आसान हो जाता है। ये मैं अपना व्यू बता रही हूँ, बाकी सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। और अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आती तो शशि सर से मैं फोन पे ही पूछ लेती हूँ, और कभी कभी शशि सर खुद कॉल करके मुझे कई बार कह देते हैं कि अनीता जी अच्छा क्या क्लियर नहीं हो रहा था, क्या समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मुझे समझाते हैं। तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ सर की, एंड थैंकफुल टू लेजली ऑल्सो जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए प्रेरणा दी। और आज मेरी गेस्ट आई हुई हैं OMUG 5 मिसेस सुनीता यादव। और बस वो और क्या कहूँ कि बस ये है कि मुझे अपनी आगे की यात्रा के लिए और रास्ता मिल गया। और सबसे ज्यादा जो मैं आजकल काम कर रही हूँ, वैसे बहुत कुछ सीखा है लॉ ऑफ कर्मा पर, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव। जैसे पीछे भी लेजली ने बोला कि सब भगवान की विश से चल रहा है, सर ने काफी अच्छा एक्सप्लेन करा। लेकिन वही सर ने बोला कि हमें इस पे लॉ ऑफ कर्मा पे भी ध्यान देना है कि अगर हम कोई कर्म गलत कर रहे हैं तो वो फिर भगवान की विश नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमारे को कर्म करने के लिए फ्री छोड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को कर्म भूमि है ये, वो हमें अपने विवेक से कर्म करना है और परिणाम सोच के करना है कि अगर ये हम कुछ आज हम किसी के लिए गलत कर रहे हैं या मर्डर कर रहे हैं, कुछ भी गलत कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होने वाला है। और अगर हम ये सोच के करेंगे तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो थैंक यू अगेन एंड थैंक यू टू ऑल मेंबर्स कि मेरे को मतलब मैं अपनी झोली भर के लेके जा रही हूँ, सिंपल शब्दों में बोलूं मुझे बहुत ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स नहीं आते, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है। और नए गेस्ट से मैं कहूंगी कि जरूर इस सेशन को अटेंड करें और आप लोग बहुत कुछ सीख के जाओगे यहाँ से। और अगेन ये भी परमात्मा का हुक्म ही है जो यहाँ पर आप गेस्ट आए हो बनकर, तो ये यूनिवर्स की मर्जी से ही आप आए हो। तो प्लीज प्लीज कंटिन्यू दिस सेशन। और आप भी नेक्स्ट टाइम आप भी यहाँ पर बोलते हुए मिलेंगे कि हाँ भाई हमने बहुत अच्छा सेशन अटेंड करा। थैंक्स अगेन, हरिओम। थैंक यू अनीता जी बहुत बढ़िया शेयरिंग, पावरफुल। एंड अनीता जी हमेशा दिल से शेयर करती हैं क्योंकि वो भक्ति योग में बहुत विश्वास रखती हैं, इसीलिए उनका हार्ट चक्र एकदम जो एक बच्चे जैसा ओपन हार्ट रहता है वैसा है। तो उसमें बहुत सारे इमोशंस भी भरी पड़ी होती हैं, लेकिन जब इमोशंस डिवाइन के लिए हो जाती हैं डायरेक्ट, तो फिर उनको पूरा भक्ति योग का पूरा रस में आ जाती है। थैंक यू अनीता जी, आपसे आपकी शेयरिंग सुन के हमेशा बड़ा आनंदित फील करता हूँ मैं। सो थैंक यू। यस, एंड ओमुक G5 जी, थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए। आपका पूरा नाम मैं नहीं समझ नहीं पाया, तो थोड़ा सा शेयर करिए अपने बारे में, इंट्रोडक्शन कुछ शेयर करना चाहेंगे तो। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? कोई सवाल हो आपके तो आप ये भी बता सकती हैं। कुछ शेयर करना चाहेंगे? आप म्यूट पे हैं, अगर कुछ शेयर करना चाहें। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आपको प्रोग्राम कैसा लगा? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। मेरा नाम सुनीता यादव है। मैं यहीं दिल्ली से हूँ। एंड जो भी सर मतलब आपके वीडियोस एक दो मैंने कभी यूट्यूब पर देखे भी हैं, तो कल अनीता ने मुझे ज्वाइन कराया तो मतलब मैं आई प्रेफर टू अटेंड दिस क्लास। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि जो भी कॉन्शियसनेस के साथ हम जो भी कर्म करते हैं कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो हर चीज में लॉजिक लगाना मेरी एक हैबिट थी। बट मैं उसके साथ क्योंकि जब तक मुझे उसका रिलीजन जो भी है, मुझे जब तक उसका साइंटिफिक रीजन नहीं समझ में आता, क्योंकि क्लास जब हम स्टूडेंट लाइफ में हम इस चीज को हमेशा, क्योंकि उसका साइंटिफिक फैक्ट हमें जरूर चाहिए, तो उसके लिए मैं फिर जुड़ी ये गायत्री परिवार
पंडित राम शर्मा, तो वो मैं स्टूडेंट लाइफ से ही जुड़ी हुई हूँ और उससे मेरा एक सोच ऐसा डेवलप हुआ कि अब मेरा एक हॉबी लगा लीजिए या मेरा एक मिशन लगा लीजिए कि मैं हर, जैसे जो भी हमारी धारणाओं के लिए बोलते हैं कि ये सब काफी लोगों की हैबिट होती है, कुछ नहीं है हिंदू धर्म में, फालतू के इलॉजिकल है, लेकिन मैं हमेशा उसे के साइंटिफिक रीजन ढूंढकर लोगों को समझाती हूँ कि देखो मतलब साइंटिफिकली भी ये इस तरह से ट्रू है। और दूसरा, जैसे भी आप बोल रहे हो कि हाँ कोशिश होती है ऐसा ही लाइफ को जीने की, बट फिर भी ये कैसे पहचाने कि हम कितना सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि कर्म करते हैं ऐसा तो होता ही नहीं ना कि हमारी अपनी विल उसमें जुड़ी नहीं होती है। मैं अपने आप को ऐसे मानती हूँ कि पूरी कोशिश के बाद अगर मेरा काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर मैं दुखी हूं तो मीन्स मैं सेल्फ में ज्यादा अपनी इच्छा मैं उसमें थोप रही हूँ। एक मैंने शायद एक और सेशन में भी हम लोग इकट्ठे थे तो मैंने ये बोला था कि मेरी इच्छा होती है, बट वहां मेरे मन में ये होता है कि देखो मैं जो मांग रही हूँ, हे प्रभु ये तुम ध्यान रखो कि मेरे लिए क्या सही है। अगर आपको लगता है कि मेरे में उसको लेने की पात्रता है तभी मुझे दीजिए, क्योंकि आप मुझसे बेटर जानते हो कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है या नहीं। तो क्या मैं मानूं कि मैं डिवाइन से जुड़ती हूँ उस वक्त। और दूसरी चीज मुझे ये जाननी है कि अगर मेरी पूरी कोशिश के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा, तो एक स्टेज होती है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं 1-2 दिन में उसको एडजस्ट करके ये मानती हूँ कि शायद मेरे लिए इसमें कुछ सही नहीं होगा, इसलिए ये काम नहीं हुआ। और लेटर ऑन मतलब मैं उस चीज को ओवरकम कर लेती हूँ फिर, लेकिन लेटर ऑन ये फिर सेटिस्फाइड भी होती हूँ मैं। अब धीरे धीरे ये होता है कि एडजस्टमेंट का टाइम जल्दी होना चाहिए, क्योंकि हर चीज से हम डिस्टर्ब होंगे, कभी कभी 1 महीना, या हम एक दिन में या 2 दिन में या 1 घंटे में या 10 मिनट में, तो क्या वो भी डिवाइन से जुड़ने के स्टेजेस हैं? ओके, गुड सुनीता जी, आपने काफी कुछ अपने शेयरिंग्स में बहुत कुछ कन्वे कर दिया है। तो जो कुछ मेरे को समझ में आ रहा है मैं थोड़ा सा आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी किस हिसाब से जाएगी ये आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि पूरे दिन में आप अपने आप को अगर एनालाइज करें, स्वाध्याय करना है आपको, है ना। तो स्वाध्याय का मतलब है सेल्फ एनालिसिस, औरों को एनालाइज नहीं करना है, अपनी एनालिसिस करके अगर आप देखेंगे कि पूरे दिन में आपके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस कौन से हैं और कितनी देर तक हैं, ठीक है। तो कोई भी एक इमोशन पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप, जैसे हम ये एक्टिविटी करते हैं स्वाध्याय का, आपको सिर्फ एक थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ, कोई भी एक नेगेटिव इमोशन पकड़ लीजिए, मान लीजिए एंगर, ठीक है जी। तो एंगर पूरे दिन में कितनी बार हो रहा है, कितनी बार मतलब फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आपको गुस्सा आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी का मतलब है थॉट्स में गुस्सा आ रहा है, वर्ड्स में आ रहा है, या वो एक्शंस में आ रहा है, हाथ उठ रहा है, ठीक है ना। तो गुस्से की फ्रीक्वेंसी हो गई, इंटेंसिटी हो गई और ड्यूरेशन। तो कोई भी नेगेटिविटी का अगर आप एनालिसिस करेंगे और इसमें अगर कमी हो रही है, दैट मीन्स आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। नेगेटिविटी कम हो रही है तो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। इसका उल्टा भी है, नेगेटिविटी बढ़ रही है मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में पीछे आ रहे हैं। पॉजिटिव इमोशंस कोई आप एक्सपीरियंस कर लीजिए, एंथुजियाज्म, जॉय, पूरे दिन में कितनी बार आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी देखिए। और वो बढ़ रही है तो आप आगे बढ़ रहे हैं, कम हो रही है तो पीछे गिर रहे हैं। और स्पिरिचुअल जर्नी इज लाइक ए जर्नी ऑफ ए स्पाइडर। स्पाइडर को देखा है आपने, ऊपर चढ़ता है, फिसलता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर फिसलता है, गिरता है। आपकी जर्नी भी ऐसे ही होगी। जर्नी क्या है, तमोगुण से रजोगुण से सतोगुण। अब आपको एनालिसिस करके देखना है आपकी जर्नी कहाँ पे है, इन शॉर्ट। और इस प्रोग्राम में आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मेथोडोलॉजीज मिलेंगी जिसमें कि आप वहां पे जाके स्थित हो सकती हैं। कहाँ पे जाके स्थित होंगे हम, चक्रास की लाइन में अगर हम बोले तो 7 मेजर चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, और उसके लेवल के कॉन्शियसनेस में हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो वेदांता विजडम प्रोग्राम से आप इसके चरम सीमा पे, यानी कि जो 6th या 7th चक्र है, वहां तक की जर्नी तक आप पहुंच सकते हैं। तो लोअर चक्रास में से आपको फ्रीडम और सफरिंग चाहिए। तो चक्रास की भाषा समझते हैं आप जी? यस। तो देन यू नो, फर्स्ट लोअर 3 चक्रास जो हैं हमारे, वो ईगो में होते हैं।
फोर्थ चक्र जो अनाहत चक्र है, दैट इज द हार्ट चक्र या इमोशन है, एंड थर्ड आई चक्र की कॉन्शियसनेस जो है वो है इंटेलेक्ट। तो माइंड के जो 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, ईगो, इमोशन एंड इंटेलेक्ट, ये इन चक्रास में स्थित हैं। जब आप इंटेलेक्ट पे स्थित हो जाएंगे थर्ड आई चक्र के कॉन्शियसनेस में, दैट इज व्हेन यू कैन से यू हैव अटेन्ड सम लेवल ऑफ स्टेबिलिटी, और स्थित प्रज्ञ बोलते हैं वेदांता विजडम में। ओके, तो यू बिकम स्थित प्रज्ञ, देन यू बिकम स्टेबल, एंड देन यू आर स्टडी इन द विजडम ऑफ गॉड। जब तक वहां पे स्टडी नहीं होते हैं, आपकी जर्नी मकड़ी की तरह ऊपर नीचे रहेगी। तो अभी मैं इतना ही जवाब दूंगा आपको। बाकी अगर आप प्रोग्राम में हैं, या वेडनेसडे प्रोग्राम में, या वेदांता विजडम प्रोग्राम में, तो आपकी जर्नी के और जवाब मिलेंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच, बी इन दैट इंक्वायरी, एंड लेट्स हैव अदर पीपल शेयर। So who would like to share? Sanjeev is back here. So Sanjeev, if you want to, if you're ready, you can go ahead with your share. Anything you want to share? Welcome. So Shashi, when I did that Vedanta program with you, one of the biggest thing which was I was stuck into something, and you made it very clear for me with that story of na wo sach na ye sach. Okay. Okay, and that made it so very clear into my awareness, and my not only awareness but into my mindfulness, into my actions in my life. कि जब भी कोई कहते हैं ना, कुछ एक थोड़ा सा फियर आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, थोड़ा सा लगता है कि आई एम अनेबल टू मूव ऑन फ्रॉम हियर एंड आई एम स्टक, दिस पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस अबाउट ना वो सच ना ये सच, उसको इमीडिएटली ऐसे सॉर्ट आउट करता है, एंड आई get empowered to the next level. So I would say thank you very much. With out of all the learnings, great, everything, this worked best for me. Thank you very much. Perfect, perfect. Thank you Sanjeev, wonderful sharing. And for someone who doesn't know who Sanjeev is, so Sanjeev is a mind coach, a very close friend of mine, and our spiritual journey has been, you know, like we have been pulling each other together over the last 5 years. I think that was a reunion for us because we know each other for more than 20 years. लेकिन पिछले 5 साल से जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी साथ में आगे बढ़ी है, दैट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग फॉर बोथ ऑफ अस, एंड इट हैज बीन एन अमेजिंग जर्नी. एंड टुडे इफ आई एम कंडक्टिंग दिस सेशन, द होल thrust and the force behind it is Sanjeev, who really propelled me into doing these sessions. So thank you Sanjeev for being there. Great. And to emphasize what Sanjeev has just shared, मैं वो स्टोरी नहीं बताऊंगा क्या है, as I told you, but this is a story of King Janaka. And the story is all about, the learning behind the story is what is the truth, ultimate truth, जिसको हम बोलते हैं ना, जो नेचर ऑफ परमात्मा क्या है, सत चित आनंद. तो अल्टीमेट सत्य क्या है, that is the wisdom behind this story. And once you know what is the ultimate truth, then the rest of the things you know is perception, right? Truth एक ही है, बाकी सब उसके perceptions हैं, which may not be the truth. So today, if I have a perception about something, that may or may not be the truth, but it is real for me. और मैं उसी perception के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाऊंगा, पर वो ultimate सच हो सकता है या हो सकता है ना. So when you know the ultimate truth, then it is easy to let go of your perceptions, right or wrong. अगर आपको ultimate सच पता लग गया, तो बाकी सब आपको मालूम है, आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो मेरा नजरिया है, पूरा सच नहीं है. तो क्या सच है, ये अगर आपको क्लैरिटी मिल गई, और वो इस प्रोग्राम में आपको नजर आएगा कि पूरा सच क्या है. तो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग ना ये सच ना वो सच, वो पूरा सच क्या है, जिस दिन वो पता लग जाएगा, आपके बहुत दिमाग में जो अंधेरा है वो छट जाएगा, राइट? सो दैट इज द ट्रूथ. सो थैंक यू संजीव, वेरी पावरफुल, ग्रेट. एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर और हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? अदरवाइज आई विल गिव यू ए 10 minutes ज्ञान. 10 minutes gyan on enlightenment. What is enlightenment? Yeah, ready for it? Everybody ready for it? Because that is the takeaway for this session. I promised you that. So I'll give you a 10 minutes gyan. Not very profound gyan, but very short and crisp. Ready for it? Everybody ready? Okay. तो अपनी बैकबोन थोड़ी सी स्ट्रेट कर लीजिए, थोड़ी सी कुर्सी और बेड में थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए, क्योंकि ये वेदांता विजडम का ज्ञान है. हाँ, तो थोड़ा सा पावर पैक्ड रहेगा. सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द इंक्वायरी ऑफ व्हाट इज एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट क्या है, क्या बोलेंगे आप लोग?
अब थ्योरेटिकल नहीं बताना मेरे को, एक्सपीरियंशियल फॉर्म में, एक्सपीरियंस से कम होगा लोगों को, बट स्टिल वॉट एवर यू थिंक इज योर एक्सपीरियंस ऑफ एनलाइटनमेंट, टेल मी दैट. एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर व्हाट इज एनलाइटनमेंट? जब दिमाग में आता है तो क्या क्या विचार उठते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, मोक्षा, निर्वाणा क्या है? For me, it is dissolving the separateness. Dissolving the experiencing separateness. Okay, so you become one with the and divine experiencing. unity consciousness, correct? Yeah. Okay, good But understanding. it is collective consciousness. Pardon? Collective consciousness. One with the Collective divine. consciousness. Okay, okay, fine. Right, anybody else who would like to share? That means you are merging with the connective consciousness, you can say, right? ठीक है, anybody else? माइंड शांत हो जाता है, एक लाइट, आई थिंक एक लाइट सी आती है, एक माइंड स्टेबल और शांत हो जाता है, एक लाइट सी आती है, बड़ी पॉजिटिव फीलिंग अराउंड होती है, ऐसा लग रहा होता है कि आपके फिजिकल बॉडी के अराउंड एक पॉजिटिव ऑरा आ गया है, यू नो, ओके, एंड सब कुछ शांत सा लगता है, एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स बिकमिंग क्लियर, सब क्लियर थिंकिंग हो जाती है. ऑलराइट, good understanding, perfect. So there is a divine light which is coming and enveloping you all over. That experience is there. Perfect. What else? Anybody else who would like to share? It's very close, by the way. It's very close to my visualization, my experience also. And as a healer, I know I would have shared that. So possibly you have connected that. Very good. बहुत बढ़िया. हाँ जी, और कौन बताना चाहेंगे? During this program, जब हमने एक सेशन किया था बेस्ड ऑन सबकॉन्शियस माइंड, एक लॉ था हमारा, like when we talk about conscious mind and subconscious mind, right? And things has been, how the thing you just explained that how things has been driven from subconscious mind, right? And not the conscious mind as a thing. That was the enlightenment part for me, which actually opens up, oh, this is what, you know, things are driven from here, this place. Okay. Not where I was thinking. Perfect. काफी हद तक. So, like, that is the doorway. That is the doorway. It was like open up very thing. Yeah, that's the doorway. Like it opens up, you know, so many things for me. Perfect. तो doorway वहां से है. Continuation जो संजय ने शेयर किया वहां पे है. इन सबको मिक्स करना पड़ेगा. इन सबको मिक्स करके मेल्ट करेंगे तो कुछ निकलेगा. हाँ. तो कौन बताना चाहेंगे? हाँ जी अनीता जी, गो अहेड. सर, अपने आप की ओर ज्यादा बड़े हैं. आई एम डिवाइन, आई एम पीसफुल सोल. जब हम ऐसा करते हैं तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा फील होती है और बहुत अच्छा लगता है इस चीज को, और फिर एक्सेप्टेंस करने की पावर बढ़ जाती है हमारी. ओके, एक्सेप्टेंस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं उससे एनर्जी बढ़ जाती है, यहाँ तक पकड़ते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी हम एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं. एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? यू आर एंटरिंग इनटू लाइट और द लाइट इज एंटरिंग इनटू यू. सिंपल है ना? मीनिंग समझने के लिए अगर उसको संधि विच्छेद करें, एनलाइटनमेंट मीन्स व्हाट, यू आर मूविंग इनटू द लाइट और द लाइट इज मूविंग इनटू यू. So what Sanjay said, that is a very good, perfect, symbolic representation of the light entering you, or the you are entering the light. ठीक है? तो अगर आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है तो वो एक लाइट का ओशन है, मान सकते हैं. उस ओशन में आप मर्ज हो रहे हो, जो यूनिटी कॉन्शियसनेस प्रीति जी ने कहा. सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक कनेक्ट कर पा रहे हैं? राइट. और यू इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए मेडिटेशन एंड द होल डिवाइन लाइट इज कमिंग एंड एंटरिंग इनटू यू. That is also one kind of a merger which is happening. So what is enlightenment, if you ask me? When all the cells in your body are receiving that light, that divine light is entering into every cell in your body, every neurons in your brain, that means every cell in your body is lightened up. That is enlightenment. Conscious mind, subconscious mind क्यों बोला मैंने? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं है, कॉन्शियस माइंड में क्या हो रहा है हमको थोड़ा बहुत जो हमारी सेंसेस के थ्रू पता लगता है. करेक्ट? नाउ विजुअलाइज दिस सिचुएशन. एवरी सेल इन योर बॉडी इज पार्ट ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. एवरी सेल हैज ए इंटेलिजेंस, राइट? हर सेल का एक मेमोरी है ना, तो वो सब सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है. ठीक है?
Now, consider this. When you are all the blocks, all the negative emotions which are stuck in the subconscious mind, वो patterns अगर हट जाते हैं, डिवाइन लाइट जो आ रही है उसको हम लव एनर्जी मान सकते हैं, लव एनर्जी मान सकते हैं, अनकंडीशनल लव मान सकते हैं डिवाइन की एनर्जी को. When unconditional love is entering into all the cells in your body, completely all the subconscious mind में जितने भी negative patterns हैं वो सारे अगर धुल जाते हैं, then the kind of light that comes into the subconscious mind, that spark of divinity, it will remove all the karmic imprints or the bondages or the चित्त में जितने भी आपके तमोगुण के जो बीज हैं उन बीज को वो जला देगा. इतनी पावर है उसमें, राइट. एंड अगर सिंबॉलिकली बताएं तो when I was reading the gospel of Sri Ramakrishna Paramahamsa, it is mentioned a spark of the divine. When you attain self-realization, that spark of the divine can blow or burn up all the karmas. आपके संचित कर्म को ऐसे जला देता है जैसे कॉटन की फैक्ट्री में मैच स्टिक डालो तो होगा. Can you visualize that? It will all go boom in split second. That is why it is called enlightenment, like a flash of lightning बोलते हैं ना. Flash of lightning can burn up the whole lot of karma when you touch that ocean of light. Now combine all these. Ocean of light को आपने टच किया, वो लाइट अंदर आई, आपके 50 ट्रिलियन सेल्स इन योर बॉडी अप्रोक्सीमेटली, राइट. 50 ट्रिलियन सेल्स इन योर बॉडी, 50 ट्रिलियन सेल्स. इमेजिन ईच सेल के अंदर अगर वो लाइट चली गई और वो एक जलने लग गया, लाइटेंड अप हो गया, all the neurons, all the conscious and subconscious mind are lit up with that light. That state is called enlightenment. Can you imagine the kind of power that you have then? It is like each cell is like a जो sun बुझा हुआ था, जो sun set किया अंधेरे में था, suddenly the sun is rising in its full glory. How many of you can visualize a rising sun? Now you understand the purpose of the exercise which I said, watch a rising sun. कहा था मैंने, हाँ? To watch a rising sun, if you can see that, and if you can visualize, every cell in your body is like a sun which is rising up, glowing into the full glory, blazing away. What is the kind of power that you can get in your body? Think of it. That is enlightenment. I'm not talking of a bookish kind of a definition. I'm talking of what can be the potential of enlightenment. Huh? How many of you watched Krish 2 देखी है किसी ने? उसमें वो सीन याद है when the superhero Krish is nearly on the deathbed and he's bashed up by the villain. Huh? He's actually dead, and then his father does some kind of a magic miracle through the sunlight. Sunlight is the power, right? और वो मरे हुए पौधे जिंदा हो जाते हैं और उसके मरे हुए सेल्स में वो एनर्जी आ जाती है. Correct? Forget the principle, whatever he did. He did some kind of a science. But spirituality is much more than science. तो सन के रेस को अगर हम डिवाइन लव को, डिवाइन एनर्जी को एनलाइटनमेंट मान लें और वो अगर सारे सेल्स में आ गया, all your cells will be alive, right? In the movie we believed it. Can you believe it in reality that this can happen? If you touch that ocean of love, that love can spread through all the cells in your body. 50 trillion cells is like 50 trillion suns in your body, lighting up your body. How much power can you generate? Think. उसके बाद कोई काम लाइफ में इम्पॉसिबल होगा? कोई काम ऐसा होगा जो आप नहीं कर सकते? क्या आप बोलोगे मैं छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हूं? बोल पाओगे आई एम ए फेलियर? बोल पाओगे आई एम रिजेक्टेड? That is enlightenment. That is infinite for you. Get that? And that is the access that you will get in this Vedanta Wisdom Program. There are many, many instances how you will actually experience this. And whether you do the Basic Healers Program or you do the Vedanta Wisdom Program, you will get an access to that light coming into you, or you merging into that light. Okay? To visualize that scene. जिन्होंने नहीं देखा है Krish 2, I will recommend you go and watch that. I dug out that scene and then I watched it.
It was mind blowing for me this time. पिछली बार तो मैंने कहा था चलो बच गया hero kind of a thing, but this time it was very, very different. This time it was like, wow, if that happens, if that is possible, guess what is possible in your life then? If you can energize every cell in your body with unconditional love, you will become a superhero in any area of your life. In fact, in all the areas of your life. How many of you want to achieve magical results in your life? Get enlightened. Get the light into your cells. That's it. Simple सा process है. तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं ये अचीव करने के लिए? मैं रेडी हूँ आप लोगों को वहां पहुंचाने के लिए. कितने लोग रेडी हैं अचीव करने के लिए? Yes or no? Raise your hands. Yeah. That is the power that is possible. That is the promise of this program. So that was a short, you can say, जैसे shorts आते हैं ना आजकल videos के, तो ये छोटा सा shorts था इस program का, right? So if you want to achieve that kind of a power and magic in your life, take a decision in your life that yes, I am on a spiritual journey and I'm going to achieve that. This is called निश्चयात्मिका बुद्धि. Vedanta wisdom में से बोलते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि. You take a decision, develop that intellect to take a decision in your life. Once you take a decision, it's like no options. सारे options को kill करके आप decide करते हो. ठीक है ना? So you take a decision. Yes, I'm going to do this program and I'm going to reach that journey of self-realization. Okay, so I've overshot the time by 5 minutes. Any questions? Any doubts people have? Otherwise, we will close this session. With this. Question है मेरा. Yes. I have one question. I think जो आपने भी enlightenment का बताया है, that you talked about the body consciousness, right? Body consciousness. Talking of enlightenment means soul is meeting the divine. That's it. That is enlightenment. Yes. हाँ, मैं वही confusion clear कर रहा था कि पहले तो soul and mind experience करेगा, then body में experience होगा, like you're saying. When the soul is connected with the divine, that divine energy will flow through your body and mind. That is what we are talking of. Soul is even right now it is flowing through your body and mind, but only thing is उसमें बहुत कम power है. That is why we are only living like a human being, not even like a 100% human being. हम 5% capacity पे काम कर रहे हैं. मैंने बताया ना 90% तो negative है, तो वो तो काम नहीं कर रहा है. See, all the cells in your body are working against you. तभी heart attack हो रहा है. मैंने बताया अभी थोड़ी, तभी किडनी फेलियर हो रहा है, तभी बैक पेन हो रहा है, तभी बॉडी काम नहीं कर रही है, तभी माइंड में स्ट्रेस है, माइंड में डिप्रेशन है. क्यों है? Your body and mind is not working at 100%. All your cells are you can say flooded with negativity. हर सेल के अंदर unconditional love ले आओ and see the power in your life. That is enlightenment for me. It's my definition. Right? That is how I understand enlightenment. Remove all the traces of negativity from your body and mind. Your body is full of light. Your mind is full of light. That is enlightenment. And live that life. Right now, you can just think of that life. Just imagine when you start living that life. Even a superhero like Krishna will look like a child. Get that? That is the kind of power that you can generate. I'm not saying you will generate. You can generate. It is the potential. How much of the potential are you using right now? Sadly, we human beings are not using even 5% of our potential. How many of you agree that? 50 trillion cells में से कितने cells हमारे against काम कर रहे हैं? If all the cells start working for us, see the kind of life that we enjoy. Yeah. So I leave you at that. Too much ज्ञान, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी अच्छा नहीं होता. तो थोड़ा सा digest करो, and then we will have more discussions later on. We can have one-to-one whenever you feel like. But right now, anybody who wants to share so that we can close this session. I don't want to keep on the guest hanging here for long. I said 12:30, so we will close at 12:30. Yes. Anybody who wants to share? Everybody clear? Yes? Good. So let us have some people share. At least let the guests share what they are getting out of this program.
So I will come to first Meenu ji. You have been the most vocal of all the guests. So let me see, what are you taking away from this session? क्या लेके जा रहे हैं? There are too many things that I'm taking away from here today. For one is my commitment to continue this journey that I am giving. And from here, what I'm taking is the connection that I see between you and the students, that unconditional love that which is flowing in both the directions. That is my big takeaway today, which motivates and inspires me to do this training with you. Wonderful, wonderful, Meenu ji. Thank you very much. A big round of applause for Meenu ji. Right. Who else wants to share? हाँ जी, सुनीता जी, क्या लेके जा रही हैं? आप म्यूट पे हैं, म्यूट पे हैं. Just unmute and speak. Yeah. हाँ जी. जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो चीजें टच हुई, मैं मतलब ये है कि सुनती हूँ काफी, तो प्रैक्टिस भी करती हूँ, बट आज के प्रोग्राम से ये लेकर जा रही हूँ कि इसमें और सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि उसको एक तह तक पहुंचना है. कंटिन्यूटी के लिए कहीं ना कहीं जुड़ना जरूरी है इसके लिए. अदरवाइज क्या होता है कि हम सुन रहे हैं, अपने लेवल पर जर्नी जारी है, मगर इस बीच में अगर कोई दूसरी डायरेक्शन भी मिल गई तो उसका फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट होके हम उसके भी साथ साथ चलते हैं. सेकंड थिंग, इस चीज से मैं एग्री करती हूँ कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हैं तो एक तो बॉडी में बीमारियां, जो भी मैं ये मानती हूँ कि जो भी हम बीमार हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सबकॉन्शियस सप्रेशन से ही होते हैं. जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसका सप्रेशन है, क्योंकि हम जो प्रेजेंट में बिहेवियर कर रहे हैं और मन में कुछ अलग चल रहा है. तो जो मन में अलग चल रहा है, इट मीन्स हम जो प्रेजेंट बिहेवियर है वो मन की इच्छा के खिलाफ चल रहे हैं, एंड इट रिजल्ट्स इन सिकनेस. तो जनरली जो भी हमारी बीमारियां हैं वो कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस माइंड की हर्टिंग से होती है. ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है. और इसके साथ साथ मैंने बहुत मतलब मैं इतना लंबा बीमार थी कि मैंने सफदरजंग का बर्न ओपीडी के अलावा कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा, मैंने सब ट्रीटमेंट लिया. मुझे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है, सर में है, मेरा आईज पे 11-12 नंबर के चश्मे से दिखना बंद हो गया था, और अभी मैं सिर्फ रीडिंग का ही लगाती हूँ. मतलब वो सारी चीजें मैंने इस पाथ पे काफी चला है, और अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं. तो बट फिर भी मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी के लिए कहीं ना कहीं कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ है, हम अपने काम में बिजी हो गए, कुछ और साइड चले गए तो ये पाथ फिर कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल जैसा तो हो जाता है. तो all right, very good, very good. Thank you very much. And so I'm sure that you will continue this journey, right? So welcome and thank you very much for your participation and your sharing. Thanks. Okay, who would like to share now? और कोई हैं जो शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, अनीता जी, go ahead. सर, इस सेशन के एंड में जो मेरे अभी रिसेंटली अंदर बात आई कि एक चिराग काफी है तीरगी मिटाने के लिए, उस चिराग से सदके 100 चिराग जलते हैं. जो आपने स्पार्क की बात कही, वो चिराग ही है जो अंदर जल जाता है तो हमारे अंदर रोशनी हो जाती है. और एक बुल्ले शाह जी ने कहा था कि राबदा की पाना इधरों पुटना उधर लाना. तो ये जो हम इस तरफ जा रहे हैं, ये हमारे को वो बुल्ले शाह जी की बात, उन्होंने तो एक सेंटेंस में बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, लेकिन उसी में ही है कि हम जहां जहां अटके पड़े हैं वहां से हमने अपने आप को उखाड़ कर या वहां से हटाकर अपने आप को साधना के सही रास्ते पर लेके जाना है. यही शेयर करना है. और जो अपने अपने धर्म के हिसाब से, मतलब जो जिस रिलीजन में बिलोंग करते हैं, मेरी एक अपना एक्सपीरियंस कह लो या एक रिक्वेस्ट कह लो कि धर्म आपने हमें ज्ञान दिया, वो हमारे को लाइफ में बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर रहा है. और जहां जहां हम जो प्रेयर्स करते हैं, उनको जो भी नाम जपते हैं,
उसको साथ साथ अगर हम लेके चलते हैं तो हमारी ये जर्नी और ज्यादा इजी हो जाएगी, और ज्यादा, क्योंकि हमारे को रस भी मिल जाएगा ना, क्योंकि सूखी सूखी रोटी तो कोई बंदा नहीं खा सकता। तो भक्ति का जब रस मिल जाता है तो वो हमारे को आनंदित भी करता है, और वो हमारे को आगे बढ़ाने में हेल्प भी करता है। मेरी अपनी ओपिनियन है। Thank you so much. Very good sharing. All right. So with this, we come to the end of the session. By the way, how many graduates are going to review the program? Let me know that. Raise your hands. How many of you are keen to review the program? Okay. Review means जो पहले अभी खत्म कर चुके हैं या दोबारा करना चाहेंगे उनको पूछ रहा हूँ। हाँ, तो बी गेट इन टच विथ मी, मेरे से 1-to-1 में बात कर लीजिए। और जो गेस्ट भी आए हैं, इन केस यू डोंट हैव माय नंबर, यू आर नॉट इन द ग्रुप, तो आप मेरे से जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे नंबर ले लीजिए एंड कॉन्टैक्ट मी, so that we can complete the registrations and we can start the program. Yeah, so most likely we will be starting the Vedanta Wisdom program from next Saturday. There is no gap, right? So Sanjay, there is no gap, so you're absolutely very clear in your intention कि Saturday को मेरे को आना ही है, so you are there, right? Okay, so next Saturday onwards we will start this session from 5th, and those who want to register are free to contact me so that we can take it on to the next level. Okay. Right, so with this we come to the end of the session. Thank you all for your participation. A special mention of thanks to all the guests who came here. So thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a great life. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Thank you, sir. Thank you, everyone.